हेलो गाइस, वेलकम टू द कृष्णा कुमार साहब में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट MCQ फॉर HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स स्क्रीनिंग टेस्ट पार्ट 1। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडर विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग डू यू फाइंड ग्रेटर एम्फेसिस ऑफ टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शंस। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग और नन। तो इसका क्या आंसर होगा? नन। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म सेल्स अचीवमेंट? पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन। शॉर्ट टर्म सेल्स अचीवमेंट है सेल्स प्रमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिलेटेड टू मार्केटिंग सिस्टम, रिटेलिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल सिस्टम, सेलिंग सिस्टम। तो इसका आंसर है रिटेलिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डू बाय मोर कंप्लेन लेस स्प्रेड पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ एंश्योर ए लार्ज कस्टमर बेस एंड रिपीट बिजनेस। तो इसका आंसर होगा डिलाइटेड कस्टमर। There are impulses which persuade a customer to buy certain products without evaluating the positive and negative value of the same. Emotional motives, blind motives, egoistic motives, all of the above. तो इसका आंसर होगा all of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which subject is relevant to the study of consumer behavior? इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ऑल दी अबव। तो इसका आंसर भी होगा ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है, कंज्यूमर एटीट्यूड कैन बी समराइज्ड एज इवेलुएटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड ऑप्शन स्टेटमेंट है, एटीट्यूड आर learned. Attitude are learned. Next statement है, attitude are synonyms with behavior. Next statement है, attitude have motivational qualities. तो इसमें incorrect कौन सी statement है? Consumer attitude can be summarized as evaluating of an object. ये सही है। Attitude are learned, ये भी ठीक है। Attitude are synonymous with behavior, ये गलत है। Attitude have motivational qualities, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? F.W. टेलर। Who did give the concept of hierarchy of needs? इसका आंसर होगा A.H. मास्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है हमारे पास, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। रीजन्स, मैनेजर्स फर्स्ट प्लान देन ऑर्गेनाइज एंड फाइनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये ठीक है। मैनेजर फर्स्ट प्लान देन ऑर्गेनाइज एंड फाइनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग कोड्स। तो यहाँ पे असर्शन जो है वो सही है, लेकिन रीजन जो है वो गलत है।
पार्ट टू का फर्स्ट क्वेश्चन है किंग डिमांड कर्व इज रिलेटेड विद ओलिगोपोली। सेकंड क्वेश्चन है इसका हु इज नॉट एसोसिएटेड विद HRM, के डेविड। डेल योदर है और एडविन बी फिलोसफी है, मैकेल जे जोइस पे है, कौन सा नहीं है, के डेविड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरिट रेटिंग इज नॉट नोन एज जॉब रेटिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच से रिलेटेड है जिसमें हमारे पास दिया है फेमा। तो फेमा कब इस्टेब्लिश हुआ? 1999 में। इंडियन फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ? 1948 में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब आया? 1947 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी डिक्रीज बाई 20% एंड द डिमांड फॉर दैट commodity increase by 40%, then elasticity of demand would be highly elastic. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तुम्हारे पास स्टेटमेंट्स दी हुई है, इनमें से कौन सी सही होगी वो फाइंड आउट करना है हमने। इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स द इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव अल्थो द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बाय पॉजिटिव। तो ये सही स्टेटमेंट है। इन इन्फीरियर गुड्स द इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आर पॉजिटिव, तो ये गलत है। इन इन्फीरियर गुड्स द इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आर नेगेटिव, ये भी गलत है। इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स एंड इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव ऑल्थो द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव, ये भी गलत है। इसका सही से आंसर होगा इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स द इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव although the substitution effect by positive. Next question है in perfect competition the demand curve of a firm is horizontal. Next question है which one is not non-financial incentives. तो इसका आंसर होगा additional bonus on minimum wasteful expenditures और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से? परमानेंट जॉब, पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है HRM डज नॉट इंक्लूड सेल्स प्रमोशन। HRM में क्या इंक्लूड होता है? जॉब रिलेशन, प्रमोशन अप्रेजल, जॉब एनरिचमेंट। तो कौन सा इंक्लूड नहीं है? सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म 1 to B इज कॉल्ड पावर ऑफ द टेस्ट। द एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस the area under normal distribution covered within mu plus positive negative limit is total area equal to 1. Next question is sampling distribution of mean is very close to the standard normal distributions when A and B population is normally distributed. Population is not normally distributed but sample size is large. Next question is if the value of coefficient of determinations is 0.64, what is the value of coefficient of correlations? 0.8.
या 0.08। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट foregone in favor of production of another product. Next question है if two commodities are complementary then a rise in the price of one commodity will induce a backward shift in demand for the other commodity. If two commodities are complementary, then a rise in the price of one commodity will induce a backward shift in demand for the other commodity. Next question is what is the characteristics of a purely competitive market? Consumer surplus. फिर मैच लिस्ट 1 with लिस्ट 2, cost function, engineering method, supply function, factor prices, production functions, isoquants, oligopoly, kinky, demand curve. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एनालिसिस योर बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट इट इज़ यूजफुल टू केयरफुली इंस्पेक्ट। तुम्हारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं थ्रेड्स, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो इसमें जो है वो सभी जो है राइट आंसर है, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेट? न्यू ट्रेड रेगुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस वाज प्रोपाउंडेड बाय ब्रूम। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस वाज प्रोपाउंडेड बाय ब्रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन प्लानिंग? तो प्लानिंग प्रोसेस में क्या है प्लानिंग प्रोसेस? सबसे पहले आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फिर उसके बाद डेवलपिंग प्रीमाइसेस, फिर आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, फिर इवैल्यूएशंस ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज, फिर सिलेक्शन द प्लान, फिर फॉलो अप एक्शन। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, determining alternative course, identifying needs of employees, planning is looking ahead and control as। सही, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो है वो प्लानिंग का स्टेप नहीं है, वो कौन सा है? आइडेंटिफाइंग नीड ऑफ एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोल इज लुकिंग बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन प्रोजेक्ट रैंकिंग इन कैपिटल बस्टिंग डिसीजन एज पर एनपीवी एंड आईआरआर। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कोई भी सही नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। फिर मैच द फॉलोइंग ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड फ्लोज, प्राइस ट्रेंड्स, इंटरनल सेक्टरल लिंकेज ऑफ इकोनॉमी। तो ट्रेड पॉलिसी किससे मैच होगा? इकोनॉमिक पॉलिसी से। ट्रेड फ्लोज जो है ग्लोबल लिंकेज, प्राइस ट्रेंड्स जो है इकोनॉमिक कंडीशंस, इंटरनल सेक्टर लिंकेज ऑफ इकोनॉमी, स्ट्रक्चर एंड नेचर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशंस? इंक्रीज एंटरप्रेन्योरशिप, concentrations of economic power, better management of enterprises, freedom from bureaucracy। तो इसका आंसर होगा इंक्रीज एंटरप्रेन्योरशिप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्ट सिस्टम इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट इज रिलेटेड टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट। तो इसका आंसर होगा वारंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज रिलेटेड विद माइक्रो फाइनेंसिंग SHG। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, तो कस्टमर जो है वो इंटरनल एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन द टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म रिजल्ट इनटू ऑपरेटिंग लिवरेज। The presence of fixed cost in the total cost structure of firm result into इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग लीवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइंस व्हेन द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज increases. Who advocate it? NIA net income approach, a view that the dividend policy of a firm has a bearing on share valuations advocated by James E. Walter is based on which one of the following assumptions? Retained earning is only source of financing. Thanks for watching. Keep like, share and subscribe this channel.